इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है जिसका हेडिंग मैंने दिया है डिस्कार्ड दोज ऑफ द ऑप्शंस दैट लीड टू कॉन्ट्रडिक्शंस। और इस क्वेश्चन में है क्या पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात उसके बाद करेंगे। द क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑन द inclined plane that makes up an angle alpha with the horizontal, and there are two boards, one on top of the other. ये दोनों boards हैं. Is it possible to choose such values of the masses of the boards m1 and m2 and the coefficient of friction between the board and the plane? Board and the plane is mu1. Mu1 is here perhaps. Yeah, it is written. So, and against each other, दोनों के बीच में friction coefficient का value mu2 है. So that the lower board slips out from under the upper one. Slipping lower board की होनी है upper वाले के नीचे से. And there is an additional information that at the initial moment the boards are at rest. So I don't think it is difficult to find out what forces act on the boards, but to exactly find the direction of the force of friction on the boards, we have to assume something like we need to know what are the velocities of the boards. That means the force of friction of the boards against each other depends on their relative velocity. That means which of the boards slides with greater acceleration, we need to know, because everything was at rest initially. So when they start moving, they will have accelerations. So we need to know which of the boards will have greater acceleration, and that is important to know. So we need to we need to go through all conceivable options, because we can't assume certain directions of friction forces and do our calculations. But the statement of the problem, the heading of this problem reads, discard those of the options that lead to contradictions. That means I'm going to do one thing. Because the problem under consideration is we require to find out whether the motion of the lower board is possible with higher acceleration or not. So this is the problem. So I'm going to assume it yes. Let's assume that yes, ये हो रहा है. Lower board is having a greater acceleration than the upper board. That means you know what to think. So मैंने इसका acceleration A1 मान लिया लोअर बोर्ड का, और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन A2 मान लिया. एंड आई एज्यूम्ड दैट A1 इज ग्रेटर देन A2. एंड देन जब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आपको शो करने हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस स्पेशली, तो मैं कर सकता हूँ. जैसे ये सारा कुछ करने के बाद मैं फ्री बॉडी डायग्राम्स बना सकता हूँ. तो मैंने मान लिया कि M1 पर जो फोर्स लग रहा है वो कुछ लग रहा होगा. एक तो ग्रेविटी का फोर्स M1G, M2 पर भी लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही M2G. नॉर्मल लग रहे होंगे. इस पर जो नॉर्मल लग रहा होगा, इस नॉर्मल को मैंने N1 मान लिया. इस पर जो नॉर्मल लग रहा होगा इसको मैंने N2 मान लिया. एंड
इसके रिस्पेक्ट में ये जो स्लिप कर रहा है इट हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में ये स्लिप कर रहा है ऊपर की ओर, इसकी वेलोसिटी कम होगी किसी मोमेंट पर, इसकी ज़्यादा होगी. द लोअर बोर्ड इज फास्टर, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बोर्ड द अपर बोर्ड इज स्लिपिंग अप द इंक्लाइन. सो M1 पर जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की ओर लग रहा होगा. दैट मीन्स नहीं, M2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा. दैट मीन्स M1 पर आगे की ओर लग रहा होगा, यही सेम फ्रिक्शन फोर्स. एंड देयर विल बी डिफरेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन फोर्सेस बेसिकली काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, तो आई डोंट नीड टू वरी. काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. और ये भी स्लिप कर रहा है नीचे की ओर लोअर बोर्ड इंक्लाइन के अगेंस्ट में, तो नीचे से इंक्लाइन भी इस पर जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा ये कुछ वो अप द इंक्लाइन ही होगा. एंड हालांकि इस पर एक और फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, एक और नॉर्मल भी लग रहा होगा लोअर बोर्ड पर. जो इसने N2 लगाया है अपर बोर्ड पर वो भी लग रहा होगा इस पर लोअर बोर्ड पर, ये N2 भी लग रहा होगा. तो ये सारे तो फोर्सेस हो गए इस पर. नाउ ये फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के बाद वी कैन मूव एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बोथ द बोर्ड्स. तो मैं पहले M1 का लिखना पसंद करूँगा. तो M1 डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन A1 है. तो डाउन द इंक्लाइन M1 पर जो फोर्स लगेगा वो एक तो M1G साइन अल्फ़ा लगेगा, और M1G साइन अल्फ़ा इस पर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता है, तो माइनस यहाँ पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल का वैल्यू μ2 है, μ2, और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू μ2 है और नॉर्मल का वैल्यू N1 है. सो दैट मीन्स μ2 N1 माइनस दिस फोर्स, दिस इज μ1. नहीं, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन N1 नहीं है, सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड ड्यू टू द नेचर ऑफ द पिक्चर आई हैव ड्रॉन. μ2 N2 है, N2 है इन दोनों के बीच का नॉर्मल, और μ2 है दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट. सो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज μ2 N2, and the force of kinetic friction exerted by inclined plane on the board can be written as μ1 N1, and this will be equal to mass into acceleration m1 a1. This is my equation number 1. And then I would like to write the equation of motion for M2, and this is simply down the incline. This is M2G sin alpha plus the force of friction, kinetic friction acting between them, and that is μ2 N2 and nothing else. That will be equal to mass into acceleration of the board 2. That is the equation number 2. And then I do nothing except watching these two equations. And then I got few impressions, like it seems to me that A1 is less than G sin alpha. या ये दोनों नहीं होते, जो कि होंगे ही. A1 is less than G sin alpha, and A2 will be certainly greater than G sin alpha. And look what we found by assuming. We assume that A1 is greater than A2, and by assuming we got a contradiction that A1 is certainly less than A2, because A2 is greater than sin alpha and A1 is less than G sin alpha.
So these two are contradictory. That means we got A1 less than A2. Thus a contradiction has been obtained under the assumption made by me that A1 is greater than A2. This means that the assumption that the lower board can move with greater acceleration is erroneous. And this is not possible, because these two are true for any value of masses, any values of masses. So this cannot be possible. We sometimes solve problems like this in friction. Thank you very much for watching.